esteemed group of individuals gathered here today. Your presence adds immense value to the richness of this session. So before we dive into the heart of today's session, let's take a moment to express our gratitude to all our distinguished guests, luminary speaker, and to each one of you for taking out the time to be here. I request Dr. Vivek Singh Kushwaha sir, Director IPS Academy IBMR Indore, to extend a floral welcome to our chief guest and the speaker for today's session, Swami Mukundananda ji. Thank you so much, sir. I would again request Dr. Satyakam Dubey, sir, Director Admissions, IPS Academy, to extend a floral welcome to Dr. Anil Bajpai, sir. Thank you so much, sir. And before we begin with today's session, we would like to share a glimpse into the heart and soul of our institution through a very short video presentation for our guests. IPS Academy is not just a place of learning. It's a community dedicated to the creation, application, dissemination of knowledge, skills, spirit of competitive excellence, building up generations of global citizens and value-driven professionals for the corporate world and society. I request the AV team to please play the video. IPS Academy Institute of Business Management and Research is an integral part of IPS Academy group of institutions. This institute is established in the year 1994. We have completed almost more than 25 years in professional education, in imparting professional education. We are offering undergraduate level course, postgraduate level course and doctorate level program. At undergraduate level, we are offering BBA, BBA Foreign Trade, BA Economic Honors program, and in postgraduate core MBA program, that is MBA full-time, MBA International Business, MBA in Marketing Management and MBA Financial Administration, along with the doctorate level program, that is PhD in Management and PhD in Economics. To bridge the gap between academia and industry, we have signed MOU with National Stock Exchange Academy, NSE Academy. And as these value-added programs, these are incorporated in such a way that artificial intelligence and machine learning play an important role while planning a professional career of our students. IPS has always advocated for a strong industry-academia interface and associations. It provides a live platform which gives students and cutting edge to empower and charge to deliver as cutting edge technocrats and dynamic managers. We have a full-fledged industry academia interface cell. We have a sports facility. The institute strongly believes in all-round development of these students. Therefore, it provides for an organized a number of indoor as well as outdoor sports activities, such as swimming, football, cricket, horse riding, table tennis, etc. This not only helps in refreshment but also instills energy into the students and help them develop a sharp mind. The vision of Institute of Business Management and Research IPS Academy aims to be a top management business school. It also aims to be a global business school striving for academic and professional excellence in India and world. The mission is to shape up innovative and socially responsible leader who are capable of managing change in a competitive environment and can fulfill the current and future demands of industry. Achievements of the institute: only institute in MP to be ranked in the rank band 76 to 100 by Ministry of Human Resource Development in the National Ranking Framework. Ranked in top 100 by Ministry of MHRD in the National Ranking Framework for 4 consecutive years. Ranked in top 50 institute in India by leading business magazines
IPS Academy is a NAAC accredited and ISO certified institute. Awarded second rank in Indore by All India Management Association, ranked A category college as per Business India survey. First and only private management institute from MP to be placed in national ranking framework by Ministry of Human Resource Development for 4 consecutive years. Most of the best placement in Central India. Approved Management and Economics PhD Research Center. As our alumni base is concerned, it's more than 10,000. Towards the end of this visual journey, we would want to express our gratitude to everyone who has been a part of our story. Our dedicated faculty members, enthusiastic students, supportive alumni, and all our well-wishers. A huge round of applause for all of us too. So dear students, today we are privileged to have a spiritual luminary amongst us, someone whose teachings have touched hearts and minds worldwide. Would request the AV team to display the introduction of Swamiji. Swami Mukundananda is a world-renowned authority on yoga, spirituality, and mind management techniques. He is a senior disciple of Jagat Guru Sri Kripaluji Maharaj and a unique sannyasi who has a distinguished technical and management education from IIT Delhi and IIM Calcutta. He is the founder of unique yogic system called JK Yoga, also known as Yoga for the Body, Mind and Soul. Swamiji is a captivating speaker whose discourses are attended by thousands of people in India and abroad. His lectures are very popular on the social media as well. He is frequently invited to speak at various premier institutes of the world such as MIT, Yale University, Stanford, Kellogg, Princeton, etc. and Fortune 500 companies such as Google, Oracle, Intel, Yahoo, Amazon, Microsoft, American Airlines, etc. Swamiji has written several extremely popular books on various interesting subjects including yoga, art of mind management, healthy diet, and the Bhagavad Gita. Over the last 4 decades, Swamiji has helped transform the lives of millions of people around the globe with his profound knowledge. To fulfill the dreams of providing world-class education and health, Jagat Guru Kripalu Yoga Trust JKYT was established in the year 2008. Swamiji, it is an honor to have you with us today. So ladies and gentlemen, dear students, our mind is a powerful tool and understanding its intricacies is the key to a balanced and joyful life. Today, we will explore the art and science of mind management and learn practical techniques for cultivating a positive and focused mind. Throughout this session, we encourage you to actively participate. Feel free to jot down your questions as we'll have a question-answer session with Swamiji towards the end. So now, without further delay, let's welcome Swamiji for such an inspiring session. I'm feeling extremely energized to be in the midst of the dynamic young students and the luminary faculty of IPS Academy. Thank you so much for inviting me here. The aim of all the students is success, happiness, and fulfillment in life. Do you know what is the most powerful resource for achieving success? It's not money. It is not posts. It is a 6-inch space between your 2 ears.
This is the mind that you possess. The mind is such a powerful machine. If it is out of control, it will make hell out of heaven. You may be in the most wonderful place, but the agitated mind will make you experience the miseries of hell. On the other hand, if you have learned the art and science of mind management, in the most hellish place, you will experience heavenly joys. That is why, if you wish to make your life auspicious, जीवन को यदि मंगलमय बनाना है, आनंदमय बनाना है, सफल बनाना है, you must learn how to conquer your mind. Listen to this story. There were two patients in the emergency ward of a hospital. Both were bedridden. They were not allowed to get up. Since they were together, to pass time, they used to discuss their childhood, their college days, their spouse, children, etc. Time pass. One patient's bed was close to the window. For 1 hour, he would be made to sit up and he would look outside. There, he would see a wonderful garden with a fountain in the center, and he would describe to his friends the scenery. Birds would come and bathe there. Benches around would have old ladies sit and chit-chat. Little children would come and play with tricycles. The trees and flowers were so enchanting. When he would explain the scene, his friend's mind would come alive. He would look forward to the time when his friend would explain the outside world, which was such a stark contrast to the dreary environment of the hospital ward. किंतु एक दिन उसके मन में कीड़ा घुस गया. ये मेरे दोस्त को ही सब आनंद क्यों मिलता है, भगवान मुझे क्यों नहीं दे रहे? He started developing envy for his fellow patient. He should have thrown the thoughts away, but he nurtured them until they festered into a wound, and he started hating his friend. One night, his friend started coughing as if he was gasping for breath and in great discomfort. That patient should have pressed the emergency bell, but he was so agitated it did not come to his mind. This patient was seeing the situation. He should have pressed his bell, but he was so full of hatred. He thought, इसको परेशानी हो रही है, अच्छी बात, he deserves it. That patient coughed a few more times and then there was complete silence. In the morning, the nurses came. They did not know what had happened at night. They vacated the dead body. This patient waited for 2 days to go by so nobody should suspect. Then he made a request. Can my bed be moved next to the window? They said, yes, it is empty. He came there and said, can I be allowed to sit up for a few minutes? They said, you are healthy enough now. They allowed him to sit and he looked out of the window. And what he saw shocked him. There was the wall of a warehouse. He asked the nurses, what is this?
They said next to the hospital is a warehouse. So if you see out of the window, that is what you find. He said, what was it my friend used to see? They said that was the beauty of his own mind. You see, the world is as it is. How you look at it will make all the difference. कुछ लोग नेगेटिव थिंकिंग में अटक जाते हैं. जैसे अगर आम का रेशा कहीं अटक गया, our tongue keeps going to check यहाँ पर क्या है. There are so many places the tongue can visit, but it will only go to that point. ये क्या अटका हुआ है? This is the negativity bias of our mind. You have got 24 areas in your life that are fine. Your mother is fine, father is fine, everything. लेकिन एक दोस्त परेशान कर रहा है. So mind keeps on saying, ऐसा व्यवहार क्यों करता है, ऐसा व्यवहार क्यों करता है. अरे भाई जो 24 ठीक एरियाज हैं उसको तो सोचो. This negativity bias makes us unhappy. It cripples the potential of our life. Understand one thing. Everything that you do, its seed lies in your thoughts. Just as trees come from seeds, no tree can come without a seed. Everything that you do starts with a thought. Good thoughts will lead to good actions. Bad thoughts will lead to bad actions. If you wish to improve the quality of your works, you must start with the quality of your thoughts. People are putting the cart before the horse. They are struggling to improve their environment. Instead, you struggle to improve your thoughts. The environment will automatically follow. एक लड़का है, वो गरीबी में पैदा हुआ, रेलवे स्टेशन में चाय बेचता है, लेकिन अपने अंदर अच्छे विचार उत्पन्न करने शुरू कर दिए. काश मैं मानव मात्र की सेवा कर सकूं. Those thoughts attracted good circumstances to him. He got a scholarship to a good college, and then he got another scholarship, and finally he attracted the attention of a big capitalist who said, I wish to put a factory, I'll put you in charge. After 20 years, you meet that person. He has a company that is employing 10,000 people. You may say, he just became lucky, but he attracted the luck to himself by choosing good thoughts. Do you know the science of how to improve your thoughts? Every day, 50,000 thoughts are passing through our mind. These thoughts make us happy, make us sad, make us positive, make us negative. Those thoughts are created in the factory of your mind. This is the body. It is the physical machine. Like that, you have a subtle machine, which is the mind. Neurological science. Are there any medical students here? Neurological science is still trying to understand what is the difference between the brain and the mind. Reductionist scientists say there is no separate thing like the mind. It is only the neurons. But our Vedas tell us the brain is like the hardware.
There is a subtle energy that has made the subtle machine called the mind, which is like the software accessing the hardware of the brain. And that mind is the factory for your thoughts. These thoughts are the forerunners to your actions. So if you wish to make your life a success and a happy one, you must master the machine called the mind. The Bhagavad Gita says, Uddhared atmanatmanam atmanam avasadhayet atmaiva hyatmano bandhur atmaiva ripuratmanah. The Gita is telling us, uplift yourself by the power of your mind. Do not degrade yourself. For the controlled mind will be your best friend, and the uncontrolled mind will become your worst enemy. I teach the science of mind management over 7 lectures of 1.5 hours each. But I will compress a few gems of wisdom for the young friends out here. What is the first thing to do in mind management? Understand the gap between the environment and your mind. During the Second World War, when Hitler was on a rampage, he took 6 million Jews and put them in concentration camps and killed most of them. It was one of the darkest things in human history. उस समय एक ऑस्ट्रिया का साइकोलॉजिस्ट था विक्टर फ्रैंकल, परिवार सहित उसको भी सबसे भयानक कंसंट्रेशन कैंप ऑश्विट्स में डाल दिया गया. उसके आंखों के सामने उसके हजारों दोस्त मर गए, उसके परिवार के सब सदस्य मर गए. The situation in the camp was inhuman. But in the midst of that, he realized he has got one freedom that nobody can take away from him. This is the freedom to choose his own thoughts. He decided, I will choose happy thoughts. He decided to be happy. बाहर जो गड़बड़ हो रही है होने दो, हम खुश रहेंगे. This is what the Gita says is the sthit pragya. Now the others would ask him, why are you smiling? He would say, it's my choice. He became an inspiration for the guards. He decided to live through the ordeal, and when he would become free, he would announce his discovery to the world. In 1945, when America liberated the remaining from the German camps, he was released and he went back to practicing psychology. He wrote a book called Man's Search for Meaning in Life, which was translated in many languages of the world. He said, look, life is often difficult. There are often unpleasant circumstances in life. कोई एक विद्यार्थी है जिसके जीवन में कठिनाई नहीं है. ऐसा हो ही नहीं सकता. ये जीवन ही ऐसा, संसार ही ऐसा है. But the choice you have is, how do you choose to think? So between the environment and your mind is a gap. Those people who don't realize this gap, they feel controlled. They feel that the external stimuli govern them. उसने ऐसा बोला, मेरा मूड ऑफ हो गया. अब किसी से पूछो, भैया तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? वो अपना व्यवहार बदले तब मेरा मूड ठीक होगा.
So these are people who are controlled on the outside. लोग हमसे पूछते हैं, स्वामी जी आपका कभी मूड ऑफ होता है? हम कहते हैं हमको तो याद ही नहीं अब कितने दशक पहले मूड ऑफ हुआ था. क्यों? क्योंकि no matter what is happening, you choose your own mood. So the first thing you realize is the freedom to choose your thoughts. That freedom will set you free. And that will put the responsibility of your life on you. अगर हम ये गैप को नहीं समझेंगे तो हम अपने जीवन की समस्याओं के लिए बाहर उंगली दिखाते रहेंगे. तुम दुखी क्यों रहते हो? ये मेरे मम्मी पापा का दोष. तुम दुखी क्यों रहते हो? साहब ये मुख्यमंत्री गड़बड़ है. तुम क्यों दुखी रहते हो? साहब ये कलयुग है. लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो कहता है मेरे मन के लिए मैं जिम्मेदार हूं. Where I am today in my life is a consequence of my actions, my thoughts in this life and in past lives. And if I wish to improve, it is up to me. So when you decide that my mind should be positive and the responsibility to be positive lies with me, the next point will come forward. This is inspiration, उत्साह. आपके अंदर उत्साह कितना है? एक विद्यार्थी का समर ब्रेक चल रहा था. उसने कहा थोड़ा पॉकेट मनी कमाते हैं. निकट के मॉल ने एडवर्टाइजमेंट निकाला कि समर प्लेसमेंट फॉर फ्यू वीक्स. He also applied. He was called for the interview on Saturday morning. When he reached there, he realized that for one post there were 22 children. And he was the 22nd in the line. उसने कहा जब तक मेरा नंबर आएगा वो इंटरव्यूइंग मैनेजर तो बोर हो जाएगा. He will have made his decision by then. But he was enthusiastic. So, he did an unthinkable thing. He wrote a note and gave it to the receptionist clerk. Madam, can you please give it to the manager inside? The clerk said, look, son, when your number comes, you give it to him. No, 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 madam, this is very important. He needs to read it right now. अब उसकी अंदर जो उत्साह था, महिला पिघल गई. उसने नोट लिया और जाके मैनेजर को दे दिया. मैनेजर ने पढ़ा. The manager said, call the boy. We are selecting him. What did the boy write? The boy said, sir, I am the 22nd kid in the line. Please don't decide anything until you meet me. In doing that, he expressed his enthusiasm. ये उत्साह जो है ना, this is the motivating energy in life. चाणक्य ने सूत्र लिखे, उत्साहवताम शत्रवोपि वशी भवन्ति निरुत्साहात् दैवम पतित. आप कितना भी बढ़िया भाग्य लेकर आए जीवन में, बिना उत्साह के सब गवा दोगे. And if you have motivation, you will convert a bad destiny into a good one. So, this inspiration has the power to take you beyond all difficulties. Today,
Honda Motors is a very known brand in India and around the world. Mr. Soichiro Honda, in the 1930s, he was an engineering student in Japan. But his inspiration made him think of inventing something new. So he created a design for piston rings and took it to the Toyota Corporation. They rejected his design. Now, if he could have said, "Arey, reject kar diya. Ab to my scope for being a design engineer is finished." But his inspiration said, "Koi baat nahi, ek baar reject ho gaye to kya hota?" He went back to the drawing board. His classmates made fun of him. He did not care. He created a new prototype and took it. This time it got selected. Toyota Corporation extended a letter of credit for him to establish a piston ring factory. So he created the factory, and there was an earthquake in Japan and the factory collapsed. Again he could have said, "Hey Bhagavan, mujhse to nahi hoga." But he said, "Koi baat nahi." He went again. Now when he was about to make it a second time, Japan entered into the Second World War. And cement became in short supply. It was getting diverted to the war machinery. So what to do? He said, "Never mind. I will make a new method for making cement." And with his friends and the new technology, he made the factory again. But by then, America had also entered the war. And American bombers came and bombed his factory. Down it went again. Now what to do? In those days, the aeroplanes were of a different kind. So they would carry the fuel and then they would put the fuel in the tank and they would throw the empty gasoline tanks. They were littered around. Soichiro Honda said, "These are gifts of General Truman." He used them to make the factory once again. In the meantime, Japan lost the war. And now it lost control of the fuel fields that it had. There was no fuel for driving cars. So why will Toyota buy his piston rings? He was stuck again. What to do? So he thought, let me motorize my bicycle. This was the first motorcycle in the world. When he took it around, his friends and neighbors said, "Very nice. Can you do the same for me?" He did it for 25, 30 people and he decided that this is a sellable idea. I should create a motorcycle factory, but I don't have money. When the enthusiasm is there, no obstacle is big enough. He got a list of 5,000 stockists of bicycles and wrote them letters with his hand. 1,800 responded with little funds. So he created the first motorcycle factory, and it was a big contraption which nobody was interested in. Again he was stuck. But he changed, and next time he made a smaller version and called it the Super Cub, which was an immediate success. After that, he never looked back. It became a worldwide success. So the learning from here is कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी. अगर आपके अंदर उत्साह है, आप आगे बढ़ते चले जाओगे. That is why one philosopher called Henry David Thoreau, he said, "You may lose everything in life, but your enthusiasm, and you will gain it all again."
But that person who loses his enthusiasm is truly bankrupt. संसार में बूढ़ा वही है जो अपने एंथुजियाज्म को आउटग्रो कर गया है। अतः अगर माइंड मैनेजमेंट करना है तो समझना पड़ेगा अपने को उत्साहित कैसे करें। Sometimes, I usually don't give lectures in colleges. Sometimes, when I am invited, I cannot say no, like this. So whenever I go to colleges, students ask me one question, almost every time. This time I am putting it from my side itself. स्वामी जी, आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हमारे कॉलेज में आते हैं। अब वो हमको मोटिवेट करते हैं, यू कैन डू इट, डेफिनेटली, जस्ट थिंक यू कैन डू इट, वंस यू गो आउट ऑफ ऑल यू डन इट। तो हम लोग भी उत्साहित हो जाते, अरे वाह। लेकिन वो 24 घंटे के बाद उत्साह ठंडा क्यों पड़ जाता? देखिए, पहली बात ये, हम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, हम तो दिव्य ज्ञान बताते। तो आई विल टेल यू द डीप साइंस ऑफ मोटिवेशन, एंड देन वी विल क्लोज एंड गिव टाइम फॉर Q&A. There are two kinds of motivation. The first is external motivation. The second is internal motivation. External motivation requires an outer reward. बेटा, पढ़ाई में अच्छे नंबर आए तो चॉकलेट मिल जाएगा. Internal motivation is that which you create from within yourself. कनाडा की स्टोरी है, एक बाप आवारा था, शराबी था, जुआरी था. अब वो सीरियोसिस ऑफ लिवर से वो मरा. 2 बच्चे थे उसके, एक बड़ा एक छोटा. When they grew up, the elder child became a duplicate copy of the father. Sharabi, juari, kababi. And the younger child was responsible in every way. Psychologists went and asked the elder one, why do you have so many vices and bad habits? He said, what could I do? My father was like that. That is how I grew up. That is what I saw. Psychologist said, bhai, baat to theek hai. They went to the younger child and they asked the younger one, how come you have got all rights in your life? Good habits, good eating, good in your education, profession, social responsibility. He said, what else could I do? I saw my father making all the mistakes. How could I repeat them? Psychologist ने कहा, भाई एक ही स्थिति में 2 बच्चे बड़े हुए. एक ने पॉजिटिव उपदेश लिया, एक ने नेगेटिव उपदेश लिया. तो ये इनर मोटिवेशन कैसे उत्पन्न होगी? लगभग 35 साल पुरानी बात. हम 5 साल सन्यासी थे. पश्चात अपने गुरु कृपालु जी महाराज के दर्शन करके उनके चरणों में आए. And under his guidance, he told me, I want you to study the Vedas. Okay? Then he said, in future, I want you to distribute this knowledge around the world. कहा, अच्छा, प्रवचन देना पड़ेगा. तो ठीक है, then let me alongside with the study also practice speaking. थोड़ा अभ्यास हो जाएगा ना. लेकिन आश्रम में कोई ऑडियंस तो थी नहीं. अब 10-15 आश्रमवासी होते थे, वो अपनी सेवा में तल्लीन रहते थे. So I decided I will practice speaking to the wall of my little room. And have you ever given a lecture to the wall? In 10 minutes you become fully bored. So I would stop.
Then I went to Guruji and I said, Maharaj, gadbad ho jati. I want to practice speaking and I get demotivated. Can you please ask one ashramvasi to spare 1 hour every day? He will sit in front and I will give him the whole lecture. Now all ashramvasis were busy. But Maharajji took the opportunity to give me one useful gyan. He said, Beta, एक बात याद रखना, ये लापरवाही जो है ना, ये बाहर से नहीं आती, अपने अंदर से आती, और अपने अंदर से उसको मिटा भी सकते हैं. फॉर्मूला बताता हूं. स यत् कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तद्भि निष्पद्यते. If you create an intense longing, I want to master this science, you will then make a firm resolve. Then you will put in determined effort, and that is how you will become. But if your longing is mild, mand, your resolve will be weak, your effort will also be weak, and that is how you will become. हमने कहा, हे भगवान, हम सोच रहे थे परिस्थिति से लापरवाही आ रही, गुरु कह रहे हैं कि भी अंदर से लापरवाही आ रही. अब तो गुरु आज्ञा हो गई, इसको मिटाना पड़ेगा. नेक्स्ट डे आई मेड फर्म रिजॉल्व, लापरवाही नहीं होगी. तो पूरा 1 घंटा हमने दीवार को ऐसा प्रवचन दिया, उसकी तो भगवत प्राप्ति हो गई. After that I stayed in the ashram for 1 year. I used to give lectures to the corn fields, to the cows, to the goats that were grazing. No problem. Inner motivation. वो inner motivation कैसे उत्पन्न करेंगे, ये आज का last point. It all depends on what knowledge you keep in your head. There is the mind and there is the intellect. The mind is uncontrolled. The intellect has the power to control it. See, one 7-year-old child, मम्मी पापा से, अरे स्वामी जी इसको कुछ समझाएं, पढ़ाई नहीं करता. आपका बेटा आप समझाओ ना, नहीं हमारी सुनता नहीं. अरे बेटा क्यों पढ़ाई नहीं करते हो? अंकल मन नहीं लगता. His problem is very serious. मन नहीं लगता. The same child who says मन नहीं लगता, when he goes in the final exam, for 2 hours he controls his mind. For 2 hours there is no distraction. Doesn't matter classmate क्या करता है, खिड़की के बाहर क्या हो रहा, जो क्वेश्चन है उसका श्रेष्ठतम उत्तर जो दे सकते हैं हम देंगे. For 2 hours he has developed razor sharp focus. He had the ability. If he had sustained it for 1 year, he would have come in the MP State Board merit list. How did this focus develop? The intellect decided these 2 hours are very important. अरे मनीराम अब लापरवाही की तो सब गवा दोगे. Once the intellect decided, it controlled the mind. All the year round the intellect said पढ़ाई important नहीं, मम्मी पापा के लिए जानते नहीं ऐसे बोल रहे. So when the intellect was not convinced, it was not using its ability to control the mind. If you want to control your mind, empower your intellect with good wisdom. Thank you all very much.
Thank you so much, Swamiji. Your teachings on mind management have inspired countless individuals to lead more purposeful and fulfilling lives. And I'm sure they would do the same for us and our students too. Now, I invite the audience to pose questions to Swamiji. Please raise your hands. Our volunteers will assist you with the microphone. If you have any questions, please raise your hands. हमारी दाढ़ी देख के घबराओ मत। एक हाथ ऊपर गया है वहां पे। Good afternoon and Charan Spar Swamiji. Good afternoon. My name is Damini Chauhan. I just want to ask you that I have listened that meditation is the key to attract ourselves towards the God. बट जब हम ये कोशिश करते हैं कि हम 15 to 20 मिनट्स के लिए मेडिटेशन पर बैठें, बट बहुत सारी ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस होती है जो हम ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में थॉट्स लेके आती है और वो अंदर से एक फियर जनरेट करता है। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए और गॉड की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए कोई वेज हो सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक मन है, एक बुद्धि है। The intellect is to be empowered with wisdom, जैसे हमने बताया, and the mind is to be trained and controlled. Meditation is a tool for controlling the mind. Wisdom is a tool for illuminating the intellect. Both are necessary. The Gita says, "Mai eva mana adhatsva, mai buddhim niveshe." मन एंड बुद्धि। अब जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो अभी मन ट्रेंड नहीं, इसलिए मन में अंड बंड विचार आते हैं। आपने कहा भाई भय के विचार आते, सबके अंदर नहीं आते। किसी के अंदर क्रोध के, किसी के अंदर ईर्ष्या के, किसी के अंदर शोक के, अरे वो 2 साल पहले ऐसा हो गया। भय के विचार क्यों आते हैं? भय का कारण होता है अटैचमेंट, अपनी परिस्थिति में अटैचमेंट। तो भय क्यों आता है? अरे कहीं बिगड़ तो न जाए, कहीं गड़बड़ चीज ना आ जाए। आपको अटैचमेंट को छोड़ना है। आप कहो भाई देखो, जिसने संसार बनाया, जिसने हमको बनाया, हम उस पे विश्वास करें। हमारे हाथ में प्रयत्न है, हम अपना प्रयत्न करें और बाकी जो होगा वो ऊपर वाला सोचे, तो सब भय समाप्त हो जाएगा। एक हाथ ऊपर वहां गया। Good afternoon, sir. Good I'm afternoon. Yashasvi Wadhwani. How to overcome with overthinking? How do you overcome overthinking? Somebody said, Swamiji, my mind goes into overworking mode. It works even the weekend without pay. But that is the common problem. इसमें हम 2 चीज पहले आपको बताएं, 2 चीजें बताएंगे। पहली बात ये, यू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द माइंड। हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि मैं मन नहीं। सो व्हेन द माइंड इज थिंकिंग लाइक दिस, वी बिकम वरीड। माय माइंड इज थिंकिंग लाइक दैट, माय माइंड इज थिंकिंग लाइक दैट, माय माइंड। नाउ यू क्रिएट अ डिस्टेंस with the mind. This is the mind, this is me. The moment you distance yourself from the thoughts, those thoughts will lose their power. जैसे आप अगर चिड़ियाघर में जाएं,
वहाँ पे तमाम पक्षी केजेस में रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर आ जाए तो बहुत खतरा है। तो व्हेन वी स्टार्ट एडॉप्टिंग दोज थॉट्स, हो मैंने ऐसे सोचा, वो मैंने ऐसे सोचा, तो वो थॉट और बलवान हो जाते। तो पहले डिस्टेंस क्रिएट करो। दूसरी बात, उस थॉट के पीछे एक बिलीफ है, वो बिलीफ को चैलेंज कर दो। मान लो बिलीफ ये है कि आप, लेट अस से फॉर एग्जांपल, ओवर थिंकिंग किस चीज की हो रही है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इसकी ओवर थिंकिंग हो रही है। तो आप उसको चैलेंज कर दो, अरे भाई मेरे हाथ में तो प्रयत्न है, मैं उस पर फोकस करूं, ये फल को सोचने से क्या होगा। तो वो बिलीफ को आप चैलेंज करके वो थॉट को रिप्लेस कर दो। दिस इज थॉट सब्स्टिट्यूशन। भगवान सबकी तो देखभाल करते हैं, मेरी क्यों नहीं करेंगे? लेट मी डू माई पार्ट एंड ही विल डू हिज पार्ट। सो यू डू अ थॉट सब्स्टिट्यूशन। What happens is we become primed on negative thoughts. बोलते हैं ना भाई, सबका ग्लास जीवन में आधा खाली है लेकिन आधा फुल भी तो है। तो हम वो नेगेटिव को सोचते जा रहे हैं। अब रिप्लेस करो। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब उसको रिप्लेस करें, गाड़ी नष्ट हो गई, मैं तो जीवित हूं ना, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी। तो आप उसमें पॉजिटिव चीज को देखोगे तो नेगेटिव हट जाएगी और वो पॉजिटिव को रिपीट करने लग जाओ तो मन उस दिशा में चला जाएगा। इधर आगे लिया। Hello, Swamiji. My name is Dr. Arpita Patel from Radio IPSA 91.2 FM. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे we talk about the inner inspiration, inner motivation, but somehow मुझे ऐसा लगता है कि inner peace जो है उसको अचीव करना एक डिफ़िकल्ट टास्क लगता है, या एक आप मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो इनर पीस पाने के लिए क्या कुछ स्टेप्स होती है या फिर कोई ऐसा मेथड होता है, मेडिटेशन होता है जिससे यू कैन अचीव इनर पीस? डॉक्टर अर्पिता, आपका प्रश्न सबके लिए रेलेवेंट। पीस इज ऑलवेज एन इनर थिंग। वी आर ट्राइंग टू फाइंड पीस बाय एडजस्टिंग द एक्सटर्नल्स। स्वतंत्रता के पश्चात 76 वर्ष बीत गए। 76 वर्ष में लोगों की एवरेज कमाई 700% बढ़ गई, किंतु वो लोग जो कहते हैं हमको पीस मिला वो आधे हो गए। और टीन सुइसाइड रेट 3 गुना बढ़ गया, डिप्रेशन रेट 4 गुना बढ़ गया, डाइवोर्स रेट 5 गुना बढ़ गया। अब बाहर से तो तरक्की हो रही है किंतु अंदर से शांति नहीं मिल रही। तो हम स्वयं अपनी ही कामनाओं से अपने को अशांत कर देते। किसी के पास सब ठीक ठाक है, मेरे पड़ोसी के पास ज्यादा है। अब वो करोड़पति को भी शांति नहीं है क्योंकि वो कहता है मुझसे आगे तो अंबानी और अडानी है, और अंबानी अडानी को भी शांति नहीं है, वो देखते हैं मेरे से आगे तो बिल गेट्स। हमारी ही कामना हम अपने को अशांत करती। और आजकल ये समस्या ऑनलाइन चली गई। अब एक दूसरे की फेसबुक प्रोफाइल से, इंस्टा प्रोफाइल से देखते हैं, अच्छा इसकी प्रोफाइल इतनी बढ़िया, उसने अपने जीवन के 2 सुनहरे क्षण वो भी फोटोशॉप में एडिट करके डाल दिए और उसको कंपेयर कर रहे हैं। इससे एक नया फिनोमेनन शुरू हुआ है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
उसके साथ कुछ बढ़िया हो रहा है जो मेरे साथ नहीं हो रहा। हम आपको बताएं, सबकी हालत एक जैसी फटीचर है। जो बढ़िया जिसके साथ होगा उसके साथ होगा, जो आध्यात्मिक साइंस के साथ अंदर से मन को शुद्ध करेगा। तो गीता कहती है, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। पहले अपने अहंकार को छोड़ो और दूसरा निरर्थक कामनाओं को छोड़ो। संतोष धन परम धन, आपको शांति मिल जाएगी। नमस्कार स्वामी जी, मैं दिलीप अवस्थी हूँ, सीईओ रेडियो इप्सा 91.2 FM। नमस्ते दिलीप जी। नमस्कार। मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट है। मेरी चूँकि मीडिया में जर्नी काफ़ी लंबी रही है और मुझे काफ़ी डिफरेंट तरह के पर्सनालिटीज़ से मिलने का मौका मिला है। एक जो विषय मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है, एक शब्द इवोल्यूशन जो हमने पढ़ा है, इवोल्यूशन डार्विन की जो थ्योरी है, यस, उसके अनुसार से तो प्रकृति में लगातार बदलाव होता जाता है। सेकेंड थिंग ये है कि हमें समाज में या कहीं पर भी है डिसिप्लिन में रहने का सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि नेचर तो हमें डिसिप्लिन में रहने के लिए बोलता ही नहीं है, मगर सिस्टम हमें फोर्स करता है। तो किसी भी चीज में जो कंसिस्टेंसी होती है उसको लगातार करने के लिए उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होती। मैं उसका एग्जाम्पल बता देता हूं कि यदि मुझे या किसी को भी ये बोला जाता है कि आप लगातार इतने दिन तक इस कार्य को करेंगे तो आपको ये प्राप्ति होगी, शुरुआत में उसका उत्साह बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर रहता है और वो फुल लगन से उसको काम करता है। धीरे 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 उसका उत्साह कम होता जाता है और उसकी बॉडी को फोर्सफुली, ब्रेन को फोर्सफुली करना रहता है कि मैं ये कर लूंगा जब ही इसका अचीवमेंट होगा। ये क्या है? ये मतलब बेसिकली इस सिस्टम को मैं समझना चाह रहा हूँ। अगर मैंने आपके प्रश्न को समझा है, आपका प्रश्न ये है कि हम सब तो आज़ादी चाहते हैं, डिसिप्लिन नहीं चाहते, और डिसिप्लिन हमारे ऊपर फोर्स किया जाता, तो क्या एवोल्यूशन के विपरीत नहीं हो रहा? ये एक बहुत दार्शनिक प्रश्न है। सुख सर्वत्र उपलब्ध है। सुख प्राप्ति के लिए क्या करना है? इंस्टा के ऊपर जाके ऐसे ऐसे करते जाओ। लेकिन उस सुख की वैल्यू क्या है? जो वैल्यूएबल सुख है वो सब अपस्ट्रीम है। जो वैल्यूएबल सुख है उसकी प्राप्ति के लिए परिश्रम पड़ेगा, उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो वैल्यूएबल सुख का आप पीछा करोगे ना तो आपके चरित्र का निर्माण होगा, अंदर से सद्गुणों की वृद्धि होगी। और जो इजीली अवेलेबल सुख है उनका पीछा करो, उससे आपको कोई उपलब्धि नहीं होगी, वो आपको थ्रिल करेंगे, फुलफिल नहीं करेंगे। तो ये विडंबना सबके सामने है। हम जीवन में कौन से सुख को लक्ष्य बनाते, इस स्थिति में हम क्या सुख चुनते हैं? अब देखो, हर समय आपके सामने ये चॉइस तो है, हम वीडियो गेम्स खेलें या अपनी पढ़ाई करें, राइट? हम सुबह जल्दी उठ के ध्यान लगाएं या मटर गश्ती करते रहें। तो एक सुख ऐसा है जिससे हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, जो हमको टेम्पररी थ्रिल करेगा लेकिन लास्टिंग फुलफिलमेंट नहीं होगी। और एक सुख ऐसा है, आप उसको समझो, उसको लक्ष्य बनाओ, तो आप जीवन में उठते जाओगे। सुखार्थी त्यजते विद्या, विद्यार्थी त्यजते सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। तो कुछ लोग वर्तमान का सुख चाहते हैं,
लेकिन जो लोग विद्या को लक्ष्य बनाते तो फिर वो वर्तमान सुख को त्यागना सीखते और वो ही जीवन में अनुशासन लगाते और जीवन में उठते जाते। तो आप विभिन्न प्रकार के सुखों को समझो, उनके परिणाम को समझो और श्रेष्ठ सुख को चुनना सीखो। क्या आपको 56 में रसगुल्ले का सुख चाहिए या जीवन भर स्वास्थ्य का सुख चाहिए? ये चॉइस आपके सामने, आप जैसा चुनोगे वैसा ही जीवन में फल पाओगे। नमस्कारम स्वामी जी। लास्ट क्वेश्चन कर दे। नमस्ते सर, मेरा नाम देवांशु सोनी। मैंने ब्रह्मचर्य फॉलो किया वो पूरा 1 साल तक। उस सुबह 4 बजे उठे करता था, नहाता था और मेडिटेशन करता था, पूजा करता था। लेकिन 1 साल बाद फिर मन नहीं लगता था कि मतलब कंटिन्यू हो गया था पूरा। फिर सोचे करता था, एक दिन नहीं उठूँ, दूसरे दिन फिर मन होता नहीं उठूँ। तो ऐसा क्या करे कि कंटिन्यू कर पाए? सुबह जल्दी उठने के लिए सर नहीं, मतलब अपना कोई भी टारगेट है अपन करते हैं, लेकिन फिर बाद में मन नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम तक करने लगते। राइट। तो आपने एक ऊंचा नियम बनाया और उसके प्रति हम अपने मोटिवेशन को बनाए रखें। इसका रहस्य क्या है? और ये मोटिवेशन गायब कैसे हो जाता? वो प्रश्न तो बीच में ही रह गया कि हम मोटिवेट हो जाते हैं तो मोटिवेशन गायब कैसे हो जाती। देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं कि 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजगुण, तमगुण। ये माया में है, माया से आपका मन बना, आपके मन में भी 3 गुण है। अब कभी कभी आपकी चित्तवृत्ति सात्विक हो गई, अरे भाई आत्म कल्याण करना है और मन को शुद्ध करना है। फिर राजसिक प्रवृत्ति हुई, आप कहते हैं कर लेंगे, जल्दी क्या है, संसार में तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिनके पीछे भागना। और तामसिक प्रवृत्ति हुई, आपने कहा सबसे बढ़िया सुख तो वो निद्रा का मिल रहा था, उसको लेते जाओ। तो एक व्यक्ति का मन घूम रहा है तीनों में। ये स्वभाव है, इस सब के अंदर ऐसा चल रहा है। लेकिन उसको काउंटर करना यही साधना है। कैसे काउंटर करोगे? सबसे पहले ज्ञान को लाओ बुद्धि में। नहीं भाई, मानव शरीर तो देव दुर्लभ है, इसमें अपना कल्याण करना चाहिए, ये ज्ञान लाओ। अब वो ज्ञान निकल गया, सब मोटिवेशन खत्म हो गया। तत्व विस्मरणात् भेकीवत, जहाँ मनुष्य तत्व को भूलता है वो पशु के जैसा हो जाता। तो इसलिए तत्व को रिवाइज करो, एक स्पिरिचुअल डायरी बनाओ। उसमें जो विजडम आपको मिला है, जो सीखा है, जो समझा है, उसको लिखो, उसको सुबह शाम रिवाइज करो। जब ये नॉलेज आपके बुद्धि में रहेगी तो आप प्रेरणा युक्त रहोगे। उसके बाद तो बस मन से अभ्यास करने वाली बात। वो मन पहले उद्दंड रहेगा, जिसको सुबह देरी से उठने की आदत है, अब वो कहे हम सुबह जल्दी उठे, पहले दिन मन इतना बलवान होगा गिरा दे। लेकिन आप विल पावर के साथ को हमको उठना ही है, अपने भाई को बोलो मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दो, तो अगले दिन वो कम रहेगा मन, अगले दिन और कम, और 20-22 दिन के बाद फिर नई आदत पड़ जाएगी। नमस्ते। हम शाम को हमारा प्रवचन लाभ मंडप में है और वो बुद्धि को एम्पावर करने का ज्ञान हम डिटेल में आज शाम को, कल शाम को देने वाले हैं। आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Swamiji, for your illuminating insights on such an intricate topic. I would now like to invite Dr. Vivek Singh Kushwaha, sir, Director, IPS Academy, IBMR, Indore, to propose vote of thanks. प्रणाम स्वामी जी।
I'm really very thankful to Vajpayee ji for such an enlightening session that we have today. Especially when we talk about management, so it's a management. Nowadays, a technology is there. And the session is on art and science of mind management. स्वामी जी आपने बहुत सारी ज्ञान की जो बातें हमको बताई, जो कहानियों से आपने हमको समझाया, इनर पीस के बारे में जो आपने हमको बताया. इन शॉर्ट अगर हम बोलें, अ मैन इज़ वॉट बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स. वॉट ही थिंक ही बिकम. हमारे थॉट्स, हमारा फूड फॉर थॉट क्या है, आपने उसको टच किया ऑलरेडी. डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एट टाइम we are getting input from these sites. These are the influencer of our mind nowadays. And especially the students of undergraduate and postgraduate level in this department or in entire IPS Academy, we have close to 11,000 students. We are influenced by these things, or at time, yes, we possess the positive attitude towards life, but because of these things, the negativity increases. So, how to control our mind? It's a exercise जो आपने हमको बताया, एक continuous process है स्वामी जी. उस continuous process को एक practice बनाना है, जो aim है, जो objective है. In short, your parents having dreams, when they admit you in pre-primary, then primary, and finally you are in a stage when you are near to complete your post-graduation. At this stage, the expectation level is very high. And as that expectation, if you are able to meet those expectations, if you focus what exactly you are pursuing, what are the expectations from the society, so you have to meet those expectations. जो स्वामी जी ने अभी हमको बताया, कुछ स्टोरीज थी, 2 पेशेंट हैं, आप नेगेटिविटी माइनस कर रहे हो और पॉजिटिविटी पास ऑन कर रहे हो. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड नाउडेज. व्हाटएवर अ टास्क or a achievement that you achieve, but if it is a team achievement, that team achievement is more fruitful than an individual achievement. With these words, I'm really very thankful, Swami ji, आपने हमारे लिए समय निकाला, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर. Thank you so much, sir. So, as now we have been joined by our President, Architect Achal Chaudhary, sir, also. Sir, I would request you to say a few words for Swamiji. A huge round of applause, everyone. आईपीएस फैमिली के सभी मेंबर्स को सुप्रभात, वेरी गुड आफ्टरनून. ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उज्जैन से आने में लेट हो गया और इतने अच्छे एक लेक्चर नहीं बोलूँगा, लेकिन एक शिक्षा जो जीवन के प्रति होती वो मिस कर गया. थोड़ा सा एक जो बोलते हैं ना टेस्ट, आखिरी के 2 क्वेश्चन में वो टेस्ट मिला तो रियली मालूम पड़ा कि क्या मिस किया है. एक चीज़ ये लग रही है कि ऐसे संवादों के लिए
ये ऑडिटोरियम बहुत छोटा है, तो हमको शीघ्र ही मेरे ख्याल से इससे 4-5 गुना बड़ा ऑडिटोरियम करना पड़ेगा। और अब स्वामी जी ने जितना बताया उसके आगे क्या बोलूँ मैं, लेकिन जहाँ ज्ञान है मतलब उसका सही उपयोग। एक क्वेश्चन हमेशा दिन में आता था कि जो अधिकांश लोग एक तरह से जो उपदेश देते हैं तो वो एक तरह से वैराग्य की ओर ले जाता है। तो फिर दिमाग में आता है कि सभी यदि वैराग्य करने लगे तो ये जो डेवलपमेंट, जो आज सुख, भौतिक सुख हम प्राप्त कर रहे हैं, ये कहाँ से आता है? हम उसी ओल्ड एज वाले इसमें रहते हैं। फिर एक भारतीय संस्कृति जो पुराने मतलब जो हम देखते आए दिन हम सुनते हैं कि ये जो अभी न्यूटन ने अभी देखा तो ये इतने साल पुराना है, या ये जो चीज़ थी इतने साल पुराना। तो उस समय का यदि पूरा वो देखें तो उस डेवलपमेंट के साथ साथ ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी था। तो साइंस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दे कैन गो हैंड इन हैंड। और जो पार्ट मैंने मिस किया, मेरे हिसाब से स्वामी जी ने उसी चीज़ पे प्रकाश डाला होगा। स्वामी जी के आगे मैं और कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आप सबने सेशन एंजॉय किया, इसके लिए आपको नहीं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। Thank you so much, sir, for your kind words. एक विशेष धन्यवाद अनिल वाजपेयी जी को प्लीज। मतलब इनसे ही स्वामी जी के बारे में So he was formerly the Vice Chancellor of Prestige University. Presently he is Vice Chancellor of Jagat Guru Kripala University, जो निर्माणाधीन है। क्योंकि अनिल जी से ही स्वामी जी का मालूम पड़ा और ये कोऑर्डिनेशन हो पाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you once again, sir. So by now, all of us know that Swami Ji is an exceptional speaker and a writer too, and he pours down his thoughts in the form of books. We at IPS Academy, we are obtaining a few books written by Swami Ji for our library. I would request Honorable Swami Ji to present these books to our President, Architect Achal Chaudhary, sir. Thank you. Now, I would once again would like to request Achal Chaudhary sir to present a token of love and remembrance to Swamiji. Now, I would like to invite Dr. Rajesh Kaushal sir, Professor and Head IES IPS Academy, to present a token of love and remembrance to Dr. Anil Bajpai sir.
Once again, thank you to everyone, all the faculty members, the students, and each and everyone involved in making this a successful event and joining us in the exploration of the art and science of mind management. I request everyone to please rise upon their places for a group photograph before we all disperse for our other assignments of the day. Thank you, everyone.